Guys, hello and welcome to Zindagi 360. मैं यहाँ एडम्स मॉर्गन में बैठा हुआ वाशिंगटन डीसी का एक इलाका है और मैं एनी का इंतज़ार कर रहा हूँ. मुझे पहुँची नहीं है, न्यूयॉर्क से आ रही है, लेकिन मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि I should get some home cooked fries. It's pretty good, tell you that much. Raza, Hey Annie, क्या हो रहा है? you like some fries? No thanks. ये कहाँ से हैं? कहाँ से? फ्राइज़ हर जगह मिलते हैं. फ्राइज़ तो एक मतलब कि जैसे पानी है, फ्राइज़ है, सेम थिंग. हाँ, पर इस वक्त तो खाने का टाइम हो गया, तुम फ्राइज़ क्यों खा रहे हो? मैं इतनी देर लगाई, मुझे भूख लगी तो मैंने कहा फ्राइज़ खा लूँ मैं. What's the problem? Would you like some? No, I don't want some. I mean, you should eat proper food. This is proper food. No, this is French not fries. proper food. This is food lies parading as food. You don't want to eat fries? No, I don't want to eat fries. In fact, I think you should be eating some really good raw food. Did you even know कि DC में raw food मिलता है? नहीं, let's go. Wait, कौन सा food? Let's go. कौन सा food? Let's go. कच्चा खाना. रज़ा इतना सेहतमंद खाना खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको एक रॉ फूड रेस्टोरेंट लेकर आऊँ. अच्छे भले मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा था, बहुत गजब के फ्रेंच फ्राइज हैं और अब यहाँ कहाँ ले आई हैं आप मैंने? तो हम इस वक्त रॉ फूड रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है कैप्रा, और मेरे साथ इस वक्त है कैप्रा. How are you doing, Capra? I'm great. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much, by the way, for accommodating us at this last, We appreciate it. We minute appreciate notice. We all are very curious about raw food. So you've got a very interesting variety of foods here. Can you explain to us what each of these dishes is and what's gone into these dishes? Okay, with raw food cuisine, again, we're taking it to another level. We can have meals that mimic cooked food meals. And we start, one of our most popular entrees is the barbecue meatloaf. It's not a meatloaf, it's a meatloaf. Meatloaf, yes. Because yes. this looks like meat right now. Right. I'm thinking Well, I can have some beef. But it's better than meat. It's Right. But it is the meat. It's the meat of trees. We got tree nut, we got the almond, we have hemp seeds, we have onion, celery, mushrooms. These are all the meat of plants and trees. This is like a regular salad. Is there anything special in here? Yes, You won't yes. normally find in the salad? Yes, what we do and we use for a number of our recipes is the almond butter. Oh yeah. And we use that as a base for a lot of our recipes. And we create a nice savory sauce. We add some moisture to it because almond butter naturally is thick. So we add some bell pepper, some fresh cilantro leaves, onion, garlic, these things. We add a little either apple cider vinegar or red wine vinegar. जब तक कैप्रा हमारे लिए एक लंच प्लेट बना रहे हैं, उतने टाइम में वी कैन गो स्ट्रेट टू लॉस एंजलिस. हमारी कॉलीग मिनाल वहाँ मौजूद हैं. वो हमको एक नए खाने की तरफ ले जा रही हैं. शी इज गोइंग टू शो अस व्हाट इज न्यू एंड ट्रेंडी इन द वर्ल्ड ऑफ फूड इन लॉस एंजलिस. इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि रॉ फूड का पूरा लंच कैसे होता है. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मनाल और आपको आज लेके आई हूँ सैंटा मोनिका के इस एक्सोटिक से रेस्टोरेंट मॉनसून पे, जहाँ पे तरह तरह की डिशेस हैं. मेरे पीछे है यहाँ के चीफ शेफ अलेहांद्रो, जो आज बनाने वाले हैं ब्लैक कॉड पूरे मेरे लिए. Now, how would we tell the audience that if we need to tell them in like 5 or 6 steps how we can make black cod at home? What would we say? Well, it's very easy. Yeah. First, you need to find the fish. Okay. Like that. Find the black cod Okay. fish. सबसे पहले black cod fish ढूंढिए. Yeah. उसके बाद Then, when you get out, you need to cut it. okay. उसको Then you एक तरीके से cut it. कट करना है. एक स्पेशल तरीका है जो हमने उनका ब्लॉग देखा हुआ है. And Cut then it. And Yeah. also, you need to make the marinade. okay. Marinade. What is in the marination? Marinade is Yeah. like sake, Sake. Okay. mirin, Okay. miso. Okay, miso. Soy Sake, sauce. marine, and miso, the 3 soy 4 sauce. ingredients. Uske baad, then what's the next step? This one, you have the whole 4 ingredients. Okay, You need to make the sauce. Okay. When it's boiled, okay, you need to like keep it cold. okay, got When it. it is cold, Yeah. you need to add the miso. Oh, after it's cold. Yeah. Okay. ये रही black cod, जो इन्होंने place की है right in the middle. और अब इसको हम dress करेंगे. Nice. It looks
yummy. It looks great. Oh my god. मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितने मजे की फिश ट्राई की है. इसकी जो मैरिनेशन है जिन्होंने 3 days से करी है उसका पूरा स्वाद मुझे आ रहा है और ये पूरा अंदर तक इतना टेंडर है, इतनी अच्छी क्वालिटी की फिश है कि मजा आ गया. Seriously, it's so tender inside. It really is. Oh my god, I'm on a roll. This is really good. It's so smooth. Oh my god. इतना बड़ा पिज्जा किस जीनियस ने बनाया है पता करेंगे ब्रेक के बाद. हम इस वक्त कैपरा के रॉ फूड रेस्टोरेंट में हैं एंड कैपरा टेल मी समथिंग, what exactly is it to eat raw food? How is it different from being vegetarian or I don't know, any other sort of restrictions that you place on your diet? What exactly is it to be a raw foodie? Well, there are two things that really separate or really put raw food in terms of the food that you bring into your body. One is when you say raw, you want it to have some moisture, you want it to have some water. Our vegetables, you know, before they're cooked or steamed or things, they naturally have a water content. The second thing is the enzymes, and that's probably what people really concentrate on because the enzyme is the life force. It's the workers of the food that allow your digestion to work easier and better when processing it. The enzymes that are present inside of the food. Exactly, exactly. So From the growing process, the enzymes are created, and those enzymes are killed during the cooking process. See, the cooking process is actually the growing process. You know, the growing process is where it's getting its sunlight, the sun energy. And we don't want to destroy that. We don't want to destroy the sun energy from the food by cooking it via microwave, deep frying, oven, stovetop, or whatever other method. Capra, that was very informative. And now we're going to ask Raza, and he's missing as usual. That's perfectly alright, very normal around here. लेकिन मुझे लग रहा है कि रज़ा कुछ अनहेल्दी खाने चले गए. चल के देखते हैं कि रज़ा किधर है. So fat. I'm so fat. I'm so fat. ये है दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा स्लाइस, The Jumbo Slice, bigger than your head. ये कौन बनाता है, क्यों बनाता है और किसके लिए बनाता है, आज हम पता करेंगे at the Pizza Mart. कौन है ये पिज्जा बनाने वाला? मैंने बनाया. सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम. कैसे बनाया आपने? आ जाए पीछे, आपको बना के दिखाता हूँ. चलिए देखते हैं. आ जाए. We're here at the famous Pizza Mart. यहाँ मिलता है the Jumbo Slice, the slice that's bigger than your head. मेरे साथ अभी मौजूद है मुनीर चिश्ती साहब, जो पाकिस्तान के शहर भावन नगर से ताल्लुक़ रखते हैं. He's the one who invented the Jumbo Slice. How crazy is that? मुनीर साहब, ये आपको आइडिया कैसे आया कि जंबो स्लाइस बनाना है? तकरीबन 15 साल पहले मेरे बड़े भाईजान वो बना रहे थे, तो कस्टमर आए, उन्होंने इतना बड़ा पिज़्ज़ा इससे थोड़ा सा कम था, उन्होंने बनाया, तो उसको कस्टमर ने कहा वाओ. वो वाओ वर्ड जो था ना, उसी से ही काम शुरू हो गया. ये इस पिज़्ज़ा बिजनेस में कैसे आए और अब do you feel like you're an experienced pizza maker now? Not only experienced pizza maker, just like a doctor, cardiologist. He know where to operate on a patient. So after 30 years or plus making a pizza and having in this industry a lot of experience, a lot of friends, they call me physiologist. Physiologist. Cardiologist से physiologist. With the joke, yes. पिज़्ज़ा को हम अक्सर देखते हैं
लोग जब कोई नाराज होता है पिज्जा लेके मुंह पे मार देता है, पिज्जा पाए। किसी ने ये कभी उठा के किसी के मुंह पे मारा है? एक लड़की जिसको किसी आदमी ने छेड़ा और वो मैसेच्यूसेट्स थी, वेरी नाइस, एंड शी वाज ईटिंग अ पिज्जा एंड द गाय वाज वेरी रूड। उसने आदमी से कहा कि लीव मी अलोन। उसने वो भी खड़ा था, सूट टाई पहनी, लड़की ने स्लाइस लिया उसके मुंह पे, उसका पूरा मुंह और पूरे कपड़े उसके थे और पिज्जा सॉस और चीज से भरे हुए। चलें, not only is it a great snack, it's a good weapon too. Exactly, it is. वक्त हो गया है मेरे जंबो स्लाइस का। परेशान ना हो, ये पेपरोनी नहीं बीफरोनी है, मीनिंग 100% हलाल। The Jumbos. That is one hell of a pizza. Kepra, this looks like crab meat, but I know better. What are you about to teach us? We have one of the best sources of fat and protein in our coconut. And this can substitute, this can serve as a crab or a chicken or however you want to replace it. Okay, so how do we start? Okay, so what we're going to do first is create our dressing. And we start with the raw almond butter. So we take that and we put that right into our food processor. Again, our food processor comes with different accessories. This one is the one where it's making basically a sauce or a cream. So what we do is we add all of our fresh ingredients. We have our That's fresh. a lot of garlic. Well, we won't add all of it. Let's see, we'll add about a dozen or so cloves. These are small, so it's maybe a little more than a dozen, but that amount. And then we have our onion. So rough chopping it. Yes. See, we want the food processor to do all of the work. Okay. We don't have to spend a lot of time on the cutting board. Okay. Easy enough so far. And then our cilantro. That looks fresh. Oh, it smells really good. Basically, almost minced. You're taking the leaves. stems as well, no? Yeah. Well, the stems I'm gonna put in here. Ah, okay. Yeah, I don't want the stems. In there, I don't want to okay. bite stems. I want to, but there's moisture, there's nutrients So in the you're stems. going to still use So it? we're going to use it. We don't need to throw the stems away. Ah. Yes, the valuable part is the leaves. So we're going to put the leaves in here. Looks beautiful, by the way. The colors. It's gorgeous. Okay. Okay. All right. Now our red bell sweet pepper. So we're going to treat this the same way we do the onion. We'll have half in the sauce, and we're gonna save half for the actual presentation and give it some color contrast. Okay. So yeah. Another rough chop. So you're using the seeds as well. It's going to be a bit spicy then. Well, the seeds and the sweet pepper is not It's not as pungent hot. or as... Right, exactly. But here we have this is actually ghost pepper. Ah, One of the hottest peppers in the world. looks great. So Let's... we're just doing a little slither. just tiny This sliver. is tiny, yes. and just then for we're flavor. going to process all of this? Yes, well we'll add some, we have red wine vinegar. Okay, And these are all the ingredients for the... No. yes, and then one of my favorite is the black salt. Okay. Okay. जब तक खेपड़ा ये ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शर्त लगा लीजिए 3 मिनट में मैं कितनी मछली खा सकता हूँ। Kepra, this looks amazing. It smells fantastic. I can see सब लोगों को भूख लग रही है यहाँ पे. What did I miss? Oh my Ilyas, Shonali. God. What did I miss? I was having some pizza and वैसे सही वक्त पे पहुँच जाते हैं वैसे यार. बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा हूँ। क्या पका है? Kepra, what you got made for us here? Yeah, this is like a coconut crab salad. I also call it a coconut chicken salad. Without any crab. Without any Well, crab. it's one step away from being a crab cake, right? You ex- Yes, it's one step away. Like basically with the crab cake, we can take it and form it into a patty
and put it in our dehydrator for a few hours. That And it becomes a sounds cake. absolutely So why delicious. don't you give it a shot? It probably beats my pizza that I just had. Why don't you give it a shot as well Oh, while okay. we're here? All right, let's try this. Guys, ये हम try करेंगे, हम देखेंगे कि raw food में आखिर है क्या बात. Crab salad है लेकिन इसमें crab नहीं है. Let's give it a shot. All right. Yeah. And the rest of it is mine. तो जब तक मैं ये ख़त्म कर रही हूँ तब तक आप चलें, मैं आपको मिलवा रही हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ से जो कि एक फ्रेंच रेस्टोरेंट रन करती हैं, जो कि बिल्कुल इस खाने का ऑपोजिट है, यानी कि उसमें फैट्स और एनिमल मीट और सब कुछ इस्तेमाल होता है. और रज़ा, अच्छा आप होकर आए, मैं आ रही हूँ. रज़ा, रज़ा. मैं इस वक्त जी कैफ़े में हूँ. मेरे साथ इस वक्त हैं सुनैना आगा, एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ जी कैफ़े, यंग पाकिस्तानी, डायनामिक एंड वेरी टैलेंटेड. सुनैना, This restaurant is Z Cafe. amazing, amazing. Thank you. So while I'm enjoying this, tell me something. कि शेफ बनने का इरादा कैसे किया? अमूमन you know मर्द हज़रात तो पाकिस्तान में नज़र आते हैं जो खाना बनाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन ख़वातीन, हालांकि सब ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं बनाती. रेस्टोरेंट में यहाँ पे भी ख़वातीन ज़्यादा नहीं बनाती. It's really tough even as a woman in America because it's a male-dominated industry. Growing up in my home, mealtime was very important. Lunch or dinner or mealtime was very important. Growing up Pakistan में. Growing up Pakistan में. हाँ. मेरी नानी was very particular about everything that we ate. Fresh ingredients. Every day there was something different. Lunch के लिए कुछ different बन रहा है. Dinner के लिए कुछ different बन रहा है. लोग हमारे घर आते थे खाना खाने के लिए. So just that inspired me. पाकिस्तान में जो लड़कियां शेफ बनना चाहती हैं, क्या एडवाइस देंगे आपको? Just keep doing it, keep practicing, and you know, work hard. Hard work pays off. That's all it's really about. तो मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ. हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते हैं रज़ा क्या कर रहे हैं. Thank you so much. थैंक यू सो मच. रज़ा, ये बड़ा एक स्वीट पेपर है जो कैपरा ने मुझे दिया है, और ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो कीवी की तरह है. Right, kiwi. ऐसा करें Annie, आप क्यों ना try करते हैं? फिर नहीं, मैं try I took a bite out of it. Oh, okay, that was your bite. Right. Annie, why don't you keep that to yourself for the time being? I'm gonna finish this salad. ये भी sweet है, मैंने सुना है. हमने दुनिया भर के खाने आज खाए हैं. एक और जगह है जहाँ दुनिया भर के खाने एक जगह है. That is the Taste of DC Festival. वहाँ मैं गया था. मैंने कहा कि वहाँ lunch भी कर लूँ. While we're there, we're gonna finish off this salad. Was that yesterday when you said you were busy at work? Lunch is a pretty important part of my day, Annie. That's why I was there. It's pretty normal around here. Guys, I'm here at the Taste of DC Festival. मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि यहीं क्यों ना आ जाऊँ. यहाँ मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ खाने मिल रहे हैं. We're gonna see कि यहाँ क्या पक रहा है, क्या लोग खा रहे हैं. Let's go take a look. मैं ट्राई करने वाला हूँ fried Oreos. हम देखना चाह रहे हैं कि ये है क्या चीज़. Hi, how are you? Can I get one fried Oreo just to figure out what this thing is? I'm gonna try one. I get sugar on it? All right, wonderful. ओके अब देख सकते हैं ये एक फ्राइड ओरियो है. ओरियो कुकी अंदर है, ऊपर से ये पकोड़ा जैसा कुछ चीज़ है. लेट्स ट्राई इट, सी हाउ दिस इज. ओके. Oh. That is pretty good. Very tasty.
I suggest fried Oreos. मुझे यहाँ एक जगह मिली है जहाँ octopus खाने को मिल रहा है. मैंने octopus कभी ज़िंदगी में try नहीं किया. काफ़ी interesting सा लग रहा है. Let's see what it tastes like. Hi guys. Could I get try some of this? The octopus. This is my first time eating octopus. It's fresh Yeah. from the coast of Morocco. Octopus off the coast of Morocco, huh? All right. I love that you can see the tentacles. That looks interesting. Guys, ये मैं octopus खाने वाला हूँ. जैसे आप देख सकते हैं, tentacles भी नज़र आ रहे हैं इसके. Let's see how this tastes. Okay, ready? Ready? Actually pretty good. Okay, यहाँ लग रहा है कि मिल रहा है vegan खाना, vegetarian खाना, लेकिन जो मेरे सामने नज़र आ रहा है वो है chicken. So this is chicken, but this is not chicken. Well, can I try one? Let's see if it reminds me of fried chicken or if it's something completely different. Let me try this. Thank you so much. This looks really good. ये लग रहा है chicken, लेकिन ये बता रही हैं कि ये actually vegan है, tofu से बना हुआ है. मैं इसको try करके देखता हूँ कि ये इसका कैसा taste है. Let's see. Okay, तो अभी भी chicken लग रहा है. That tastes like chicken. That definitely tastes like chicken. It looks like chicken, tastes like chicken, but you tell me it's not chicken. Chicken नहीं है. जो मैं बता रहा हूँ, इसका taste chicken की जैसा है. Guys, मैंने खाया है fried Oreo, मैंने खाया है octopus, मैंने खाया है fried vegetarian chicken. लेकिन इन सब खानों से मेरा पेट नहीं भरा. I need something else. I need something more. कोई conventional सी चीज़, ऐसी चीज़ जैसे शायद मछली. Let's see if I can find some machli around here. Lots of machli. Trays and trays of delicious seafood fish, by the way. मैं इस वक्त एक fish eating competition में आया हुआ. मुझे यहाँ पर नहीं क्यों बैठाया गया है. मुझे जितनी ज़्यादा fish मैं ख़त्म कर सकता हूँ मुझे. She has a cheering section. Competing against all these guys. Pray for me. The Brixton Fish Eating Contest Are we gonna run out? starts in 3, 2, 1, go. And they're off. Lamar started off the right very fast. He's hitting the fish. He's got going down. Coming up in it next, we got Sia. She's working on a both-handed Sia. Delicious steak. Dogs or anything under the table. Oh my God. Well done. I'll give you that. Round for our contestants, hammering down on that. Guys, थोड़ी सी fish मुझे खानी थी, थोड़ी सी भूख लगी थी. Now I'm full. Very, very full. Guys, that's all we have for today's show in Z360. ये raw food वाला तो मज़ेदार था. It was very good. It felt really healthy. लेकिन भाई fries होते हैं. मुझे याद आ रहे थे अपने fries. मैंने कहा उठा लूँ. Guys, we'll see you next time. Don't tell Annie about this.